Good morning. I am Dr. Jacob Thomas and I am the diabetologist practicing in Advanced Diabetic Center located in Thakur Village, Kandivali East. We also have a branch in Andheri West and an upcoming branch in Bandra West. Today we are going to discuss about diabetes. What is diabetes? Diabetes is basically an illness in which there is insulin deficiency in the body. The pancreas of our body has got beta cells. These beta cells secretes insulin. In diabetes, this beta cell number decreases and therefore the insulin secretions decreases in the body. What is the function of insulin? The function of insulin is basically to take the blood sugar from the blood into the cells. This blood sugar, when it enters into the cell, is required to produce energy in the form of ATP, and that is why when there is insulin deficiency, the cells of the body, namely the cells in the muscles, the liver, the brain and almost all the tissues of the body do not get blood sugar and hence they cannot produce energy, and that is why the muscles can become weak and hence the patient can complain of weakness and later on weight loss can also take place. What are the cardinal features of diabetes? The three cardinal features which have been described are polyuria, polydipsia and polyphagia. The high blood sugar in the blood passes into the urine along with water, and the loss of water and blood sugar leads to dehydration in the body. This loss of excess water in the urine is called polyuria. Because of the dehydration, there is an excess of thirst that the person may feel. This is called polydipsia. And the brain senses that there is an inadequate energy in the body and the body requires more food, and therefore brain sends a strong signal to eat, and this results in excess of hunger to the patient, which is called polyphagia. The high blood sugar which is thrown in the urine causes concentration of glucose in the urinary bladder. This can lead to a lot of urinary infection. The muscles, as we discussed, receives less energy and therefore the bulk of the muscle can decrease, and this results in atrophy of the muscle called myopathy. Consequently, the fat mass increases and therefore the patient will have a decrease in the muscle bulk and an increase in the overall body fat mass. Decrease in the muscle mass increases blood sugar, increase in the fat mass increases blood sugar. When the blood sugar is high, the bacteria also uses blood sugar for its multiplication and growth. Hence, the bacteria multiplies at a much faster and an exponential rate, and therefore a mild infection may increase within a few hours to a few days to become a very severe infection. Almost any organ of the body can get infected in the presence of diabetes, especially uncontrolled diabetes. Common infection occur in the respiratory, urinary, skin and the gastrointestinal tract. If there is a chronic uncontrolled blood sugar, end organ damages can take place. This can lead to damage in the eyes, heart, kidneys, nerves, brain, etc. In the eyes, two things commonly occur. The first complication is cataract, which may require surgery, and secondly, the retina of the eye can get damaged, and this is known as diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy requires laser photocoagulation. In the kidneys, the first sign of failure is throwing out of micro amounts of proteins in the urine, which is called microalbuminuria, which can be easily tested and identified. Later on, when the blood sugar remains high, there develops chronic renal failure. Chronic renal failure may require hemodialysis. The nerves of the hands and legs can get affected, which is called peripheral neuropathy.
peripheral neuropathy manifests as tingling feeling in the feet and later on in the hands also. The brain can get affected, leading to strokes, that is paralysis, and multiple small vessels can get blocked inside the brain, leading to loss of memory called dementia. What are the tests required for diabetes? Basically, fasting blood sugar, post-lunch blood sugar, and a complete body profile for checking the liver, kidneys, the hemoglobin, WBC count, the ESR, uric acid, lipid profile, etc. is needed. Self-monitoring of blood glucose is now very commonly used. It is done with the help of a glucometer, and with a small pinprick, a small drop of blood can give you a near exact blood sugar reading, which can be interpreted for the treatment of diabetes. How do we treat diabetes? Basically, there are three cardinal things required in the treatment. One is diet, second is exercise, and the third is medication. In general, you should have a low calorie, low oil, low fat, low sugar, but a well balanced diet. You should eat small amounts at a time. You should have an early dinner, and you should avoid eating high calorie and high glycemic index food, and food which is made of sugar like sweets, biscuits, etc., and avoid fried items. And exercise is very important in a diabetic. It is mandatory that the person walks for 45 minutes to 1 hour every day, and also do some other exercises like weight training exercises, stretching, etc. Yoga may also help. However, do not over rely on yoga. It is better to do calorie burning exercises also. Medications are of two types: oral anti-diabetic drugs and insulin injection. This is the only part which has to be done by your doctor. Hence, you will realize that two of the things is what the patient himself has to do, that is a diabetic diet and exercise, and only 1/3 of the therapy is in the hands of the doctor. And if there is a proper understanding of diabetes and its complications, then together with your doctor, you will be able to get your blood sugars under proper control and prevent long-term complications. Diabetes, as you know, is an illness in which the blood sugar increases. Hence, diet in diabetes essentially requires a low calorie, low sugar, low fat and low oil, but a well-balanced diet. What are the things that you can have? You can have all green leafy vegetables. Karela, methi, palak, tenli, these are the best. And it has been found out that Karela, that is bitter gourd, one bowl of bitter gourd vegetable can actually decrease your blood sugar, and it has the efficiency of a single tablet of oral diabetic agent. Apart from this, patients may have any other type of vegetables that is available. All salads can be had in diabetes, that is tomatoes, cucumber, carrot, radish, salad leaves, broccoli, etc. Fruits can be had, but in moderate quantities. It is generally recommended to have about 100 to 150 grams of fruits per day. Of this, jamun, berries are the best because they actually help in decreasing the blood sugar. Jamun seeds are also known to have sugar lowering properties. Second best among fruits are apple, guava, strawberries, etc. Next in line is papaya and watermelon, and lastly mangoes and grapes, which the patient should have in very small amounts occasionally. It is important to avoid fried items in diabetes, because fried items will have high calorie content, and this high calorie content can lead to excess fats in the body and obesity can worsen
the blood sugar readings. Curds can be had, preferably made from milk without cream, so that the curds become low in calorie. Tea and coffee can be had, but prepared in low-fat milk or cow milk, and preferably sugar should not be added. Regarding sugar-free, what is recommended is 2 to 3 tablets per day is safe. However, I am not recommending it, but if you are a patient who requires sweet taste, you may add 1 or 2 tablets of sugar once or twice a day in your tea or coffee. Regarding bread, white bread and brown bread are not good. In India, unfortunately, brown bread is nothing but white bread mixed with caramel. So brown bread is not actually wheat bread, and it is high in sugar content and with a high glycemic index. Multigrain bread is recommended. Pav and white bread is not to be had. Among non-vegetarian items, you can have boneless boiled chicken, egg white and boiled fish. Other seafood like prawns, squid, etc. are high in cholesterol, and red meat is also not to be taken. With these guidelines, let me tell you the 10 important things to note in diet in diabetes. 1. Have a low calorie, low sugar, low fat but a well balanced diet. 2. Eat less at a time and eat a high fiber diet. 3. Have an early light dinner so that the night blood sugar won't rise. And after dinner, generally we do not walk, we just go to sleep, and that is why the entire sugar content of the dinner enters the blood and the blood sugars may increase tremendously. 4. Have all green leafy vegetables which are good in diabetes, bitter gourd, karela, and such type of vegetables can actually decrease the blood sugar. 5th, avoid fried foods as they are high in calorie. 6th, avoid biscuits, farsans, cakes, ice creams and sweets. 7th, in non-vegetarian, boneless chicken, egg white and boiled fish. 8. We can use small amounts of artificial sweeteners. 9. Avoid fruit juices, but you may have salted lemon juice, thin buttermilk, that is chas, soups, vegetable or clear chicken soups can be had, and an occasional coconut water can be had. And 10 point, wheat roti, bajra, jawar roti, multigrain bread can be had. Maida products which have very high glycemic index like white bread, brown bread are not good. Diabetes, as we know, is an illness characterized by high blood sugar, and it results because of insulin deficiency, which is because of lack of beta cells in the pancreas of the diabetic patients. The complications of diabetes can be related, 1, to blood sugar, and 2, to the end organ damages which occurs because of chronic high blood sugar. So, because of blood sugar, 2 things may happen. 1 is the blood sugar can become low, that is called hypoglycemia. Hypoglycemia can occur if the patient forget to eat his normal meal or by mistake takes double the doses that he has been prescribed. This results in blood sugar going down. When the blood sugar is about 40 to 50, the patient may experience giddiness, severe hunger and cramping in the abdomen, sweating and mild confusion. If the sugar decreases below 40 and up till 30, semi-consciousness to unconsciousness may occur along with profuse sweating. Less than 20 to 30 blood sugar, the patient may go into coma, and if the low blood sugar persists for a long time, permanent brain damage can occur and even death. High blood sugar causes 2 types of complication. One is diabetic ketoacidosis, the second is hyperosmolar coma.
In type 2 diabetes as well as type 1 diabetes, high blood sugar many times leads to diabetic ketoacidosis. In this, acid gets formed in the blood because of breakdown of fats, resulting in acetone and acetoacetic acid coming into the blood, and that causes infections, generally respiratory or urinary infection. This condition is a medical emergency, and if not promptly treated can lead to morbidity and mortality. Long-term complications resulting from diabetes will be because of high blood sugar resulting in microvascular complication as well as end organ damages. Diabetes, if kept high, results in microvessel complications, and that causes damage to the heart, kidney, the nerves, eyes and brain, and also to the muscles, bones, liver, etc. In the brain, diabetes can cause strokes. The incidence of stroke is much higher in a diabetic than in a non-diabetic. Also, small vessels in the brain might get blocked, and this microvessel blockages in the brain can result in memory loss leading to dementia. In the heart, diabetes can block the vessels of the heart because of coronary artery disease resulting in heart attacks. Microvessel damage in the heart can cause dilatation of the heart, causing cardiomyopathy. In the kidneys, the earliest sign of damage is a loss of protein in micro amounts in the urine, which is called microalbuminuria. If the sugar is not kept under control, the blood sugar damages the kidney, resulting in permanent chronic renal failure. This may require hemodialysis. In the eyes, diabetes can cause cataract, and it can damage the retina also, resulting in diabetic retinopathy. Cataract will require cataract removal surgery, and retinopathy will require laser photocoagulation. The nerves of the hands and the feet can get damaged, known as peripheral neuropathy. Initially, this causes tingling and numbness feeling in the feet. As the damage worsens, the feet become totally numb. The numb feet can get trivial injuries which may go unnoticed, and this can result in ulcers and gangrene of the feet. If unchecked, this can result in amputation of the feet or the leg. The nerve damage in the internal organs, that is the intestines, is known as autonomic neuropathy. Autonomic neuropathy causes altered bowel habits, that is alternate constipation and diarrhea in a diabetic patient. Diabetes also affects the other organs of the body. Lack of blood supply to the muscles, and because the muscles cannot utilize blood sugar properly, the muscle bulk shrinks, resulting in atrophy of the muscle. Hence, typically a diabetic will have very thin upper limb and lower limb and a very broad mid segment. It also affects the bones, causing osteoporosis or reduction in calcium in the bones, and that can cause weak bones and cause fractures. The ligaments of the joints can also get affected, resulting commonly in frozen shoulder. Frozen shoulder can be corrected with exercise. However, if it is not treated early, sometimes it requires surgical intervention. Hence, you can see that diabetes can result in multiple complications in our body. The good news, however, is that if properly controlled, the complications either do not occur or they are delayed. Diabetes can knock off 7 years of your life. However, again, the plus point here is that if you properly control your diabetes, that is, if you keep the blood sugars below 150, whether you check the fasting, post lunch or the random blood sugar,
then the chances of complications become very less. The 5 important points to note in fever in a diabetic patient. Fever is very common. Fever can be debilitating. Fever carries lot of morbidity. Fever can result in mortality. It can be unpredictable, and many old people may not have fever but still have lot of infections. This point is often missed by many people. That is, the thermoregulation, temperature regulation mechanism in many old people and especially in chronic diabetes is lost, and many diabetics may have infections in the body without getting any fever. And this leads to lot of neglect of the patient. Patient remains at home with infection and reaches the hospital or a doctor when it is very late. Fever and infections can be unusual type of infections in a diabetic also. What are the types of infection or fever? The infections can be because of bacteria, virus, protozoa or parasite. Viral infections are respiratory infection or common cold and cough that you often face. Dengue fever is also a viral fever. Bacterial infection like typhoid and certain gastroenteritis. Protozoal fever, malaria is an example of protozoal fever, and parasitic infection generally occurring in our intestines. What are the unique features in a diabetic? Diabetes can develop more infection because they have lowered immunity. Because the blood sugar is high in the blood, the bacteria also requires blood sugar for its multiplication and growth. In presence of high blood sugar, the bacteria multiplies at an exponential rate, and this results in a mild infection going on to become very severe in a matter of a few hours or 2 to 3 days. Secondly, when the diabetic develops an infection, the blood sugar tends to fluctuate very widely. This is because infection results in an insulin resistant state, and that is why whatever little insulin is left in the body fails to work, and this results in the blood sugar becoming very high. However, at the same time, the appetite may be lost and the patient may eat very less. So, the blood sugar can go down also. Hence, when the diabetic develops infection or fever, the blood sugars become unpredictable. It can become very low to very high. These wide fluctuations in blood sugar complicates the infection. Hence, it is important that a good control of blood sugar should be achieved. So, what should you do when you develop a fever and you are a diabetic? First and foremost, without too much of delay, you should visit your doctor. Secondly, repeated blood sugar checking is important if there is infection. Thirdly, diagnosis of the infection is mandatory, and prompt treatment of infection should be initiated. Your diabetologist should adjust the oral diabetic agents doses as needed depending upon your fluctuations in blood sugar. If the blood sugar is going too high, insulin may have to be added. So, the 5 points to remember in case of a fever in diabetic are: remember first that infections are more common in diabetic than in a non-diabetic. Secondly, blood sugar can fluctuate very widely, hence visit your doctor as soon as possible, and the infections will also spread much faster than in a non-diabetic. Third, if you have been checking your blood sugar with your glucometer once a week and you develop fever,
it is important that you do repeated blood sugar checking, sometimes daily or even 2 or 3 times a day, depending upon the severity of your infection. Fourth, oral drugs should be adjusted, and if needed, insulin should be added, especially if the infection is severe or you have a chronic diabetes or you are already insulin dependent. Fifth, correct and prompt diagnosis of the infection and prompt therapy of the infection is needed. Thus, by attacking the infection as well as the blood sugar, both with equal vigor, the infections can be brought under control. Remember, most diabetics develop complication because infections may not manifest as fever, and this leads to neglect of the infection, and the infection can really progress and cause lot of complications. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर जेकब थॉमस एंड मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। एडवांस डायबिटिक सेंटर में हमारा सेंटर ठाकुर विलेज कांदिवली ईस्ट में है, दूसरा सेंटर ओशिवारा यानी कि अंधेरी वेस्ट में है और एक हमारा सेंटर बैंड्रा में शुरू होने वाली है। डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? डायबिटीज़ यानी मधुमेह, ये एक बीमारी है जिसमें हमारे खून में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है। हमारे पेट के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास में बीटा सेल्स होता है और ये बीटा सेल इंसुलिन उत्पन्न करती है। डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रमाण कम हो जाता है, बीटा सेल्स का जो नंबर है, जो प्रमाण है, वो कम हो जाती है। उम्र के साथ साथ बीटा सेल्स अपने आप मरने लगते हैं, उसकी नंबर्स जो है वो कम हो जाती है। इसके वजह से ब्लड में इंसुलिन कम होता है और ब्लड शुगर यानी कि खून में शक्कर का प्रमाण जो है वो बढ़ जाती है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन ब्लड में, हमारे खून में जो शक्कर है उसको खून से लेके सेल्स यानी कि पेशी के अंदर पहुंचा देती है। इसके वजह से खून में शक्कर का प्रमाण कम हो जाता है और शरीर के पेशी के अंदर, सेल्स के अंदर शक्कर का प्रमाण बढ़ जाती है और ये जो शक्कर है उससे हमारे सेल्स एनर्जी उत्पन्न करती है और इसीलिए सारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के, यानी कि मसल्स, किडनी, लिवर, ब्रेन, सबको शुगर के वजह से एनर्जी मिलती है और उस तरह वो अपना काम करते हैं। इंसुलिन के कमी के वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है और ये जो खून में शक्कर की जो प्रमाण बढ़ने के वजह से खून में शक्कर और पानी पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाती है। इसीलिए पेशेंट को ज़्यादा पेशाब होती है। ज़्यादा पेशाब होने के वजह से शरीर का पानी सूख जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होने से पेशेंट को बहुत प्यास लगती है और हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको लगता है कि ब्लड खून में शक्कर का प्रमाण ज़्यादा होने के बावजूद भी पेशियों को एनर्जी नहीं मिल रही है, इसीलिए मस्तिष्क एक सिग्नल भेजती है कि ज़्यादा खाओ और उस वजह से डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगता है। खून का जो शक्कर है जो पेशाब में जाता है, उसके वजह से पेशाब की जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, उसमें शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है और पेशाब का इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये बहुत कॉमन हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। हमारे मसल्स को जब शक्कर नहीं मिलती है और एनर्जी नहीं मिलती है तो मसल्स काम करना कम कर देते हैं। मसल्स का जो बल्क है, जो ताकत है, वो कम हो जाती है और इसके वजह से हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में हाथ और पैर पतले हो जाते हैं और जो पेट का जो भाग है वो जाड़ा ही रह जाता है। तो जैसे अगर एक डायबिटिक पेशेंट बहुत समय से अपना डायबिटीज़ ठीक से कंट्रोल में नहीं रखे तो उसके हाथ और पैर का जो मसल्स है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, पर
जो मिड सेगमेंट है, शरीर का जो बीच में का भाग है, वो मोटा ही रह जाता है और इसके वजह से उसे चलने फिरने में और बहुत मुश्किलें आ सकती है। खून में शक्कर ज़्यादा होने के वजह से जो खून में अगर बैक्टीरिया आए उसका जो प्रमाण बहुत जल्दी बढ़ने लगता है और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शंस जो है वो जल्दी हो जाती है और इन्फेक्शन का प्रमाण जो है वो तेज़ी से बढ़ सकता है। इन्फेक्शन हमारे छाती में, पेशाब में, स्किन में या पैरों में हो सकती है। पैरों में जो इन्फेक्शन है वो अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्दी ही वो बढ़ सकती है और कभी कभी पेशेंट को पैर काटने तक की बारी आ सकती है। अगर बहुत समय तक खून का शक्कर जो है प्रमाण अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा तो एंड ऑर्गन डैमेजेस, यानी कि अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन्स है जैसे कि आंख है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, ये सब डैमेज हो सकती है। हमारी नसें हैं, जो पैरों के, हाथों के नसें हैं, नर्व्स जिसको कहते हैं, वो भी डैमेज हो सकती है। आंख में कैटरैक्ट हो सकती है, यानी कि मोती, जो ऑपरेशन के ज़रिए ही ठीक किया जा सकता है। आंख का जो अंदर का जो पर्दा है जिसको रेटाइना कहते हैं वो भी डैमेज हो सकती है, जिसको डायबिटिक रेटाइनोपैथी कहता है। उसके लिए लेज़र की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हमारी जो किडनीज़ है, जो गुर्दे हैं, वो भी ख़राब हो सकती है और शुरू में पेशाब में से प्रोटीन्स निकलने लगती है जिसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं किया तो ये जो प्रोटीन्स है इसका प्रमाण बढ़ जाता है और कुछ ही सालों में किडनी बुरी तरह से फेल हो जाती है, खराब हो जाती है और पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। पैरों की जो नसें हैं वो खराब हो सकती हैं, जिससे कई पेशेंट्स ये कंप्लेन लेके आते हैं कि पैरों में झुंझुनाहट हो रही है और अगर शक्कर को कंट्रोल नहीं किया तो यही झुंझुनाहट आगे बढ़ के पैर जो है वो पूरी तरह से सुन्न हो जाती है, यानी कि जो सेंसेशंस है वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि पैरों की नसें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं और अगर हमने ब्लड शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल में रखा तो ये जो नसों की जो डैमेज है, जो खराब होने की जो स्पीड है, इसको हम रोक सकते हैं। डायबिटीज़ में कौन से टेस्ट की ज़रूरत है? डायबिटीज़ में खाली पेट शक्कर का प्रमाण चेक करना और खाने के 2 घंटे बाद का शक्कर का प्रमाण चेक करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पूरी बॉडी की एक प्रोफाइल करना भी ज़रूरी है, जिसमें लिवर, कोलेस्ट्रॉल यानी कि चर्बी की मात्रा खून में, यूरिक एसिड की मात्रा, किडनी के टेस्ट, हीमोग्लोबिन के टेस्ट, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साल में एक बार कम से कम इसको किया जाना चाहिए। SMBG यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इसका अर्थ होता है कि छोटी सी एक मशीन है जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। इससे पेशेंट खुद ही घर पर अपना शुगर को चेक करना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और आजकल इसकी एक्यूरेसी बेटर है, पहले की मशीन से कहीं ज़्यादा अच्छा है। एक लोगों में ऐसा समझ है कि जो ग्लूकोमीटर का रिपोर्ट है वो रिलायबल नहीं होता है, पर 10 या 15 पॉइंट आगे पीछे ग्लूकोमीटर से आपको मिलेगा और इससे आपके इलाज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ग्लूकोमीटर से टेस्ट करना आवश्यक है और डायबिटिक पेशेंट को अपना SMBG यानी सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज करना चाहिए। डायबिटीज़ का उपचार किस तरह किया जाता है? 3 बहुत ही महत्व चीज़ें हैं। एक है डाइट यानी कि परहेजी, और दूसरा है व्यायाम, और तीसरा है दवाइयाँ। परहेजी डायबिटीज़ में आपको चाहिए कि आप शक्कर कम ले, तेल और घी का प्रमाण कम हो, लो कैलोरी यानी कि कैलोरीज खाने में कम हो,
पर बैलेंस डाइट हो। मतलब डायबिटीज़ के खाने में हर तरह के खाना, प्रोटीन्स, थोड़ा सा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब और विटामिन सब डायबिटीज़ के खाने में होना चाहिए। फ्राइड चीज़ें, तला हुआ चीज़ें आप अवॉइड करें। शक्कर और मिठाई जैसे चीज़ें हैं अवॉइड करें। बिस्किट्स जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। कोई भी तरह का भाजी जो है ले सकते हैं आप। इसमें करेला, मेथी, पालक, तेंदली, इस तरह के जो भाजी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती जो है सब्जियां हैं, ये बहुत ही अच्छा है। इससे शुगर का प्रमाण कम होता है और बढ़ता नहीं है। किसी भी तरह का सलाड्स जो है, काकड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, सलाद के पत्ते, ये सब बहुत अच्छा होता है। और गेहूं का रोटी, बाजरा रोटी, जवार रोटी, ये भी अच्छा होता है। दही आप ले सकते हैं विदाउट क्रीम मिल्क का बनाया हुआ, जिसमें मलाई नहीं होना चाहिए। और व्यायाम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटा रोज चलना चाहिए डायबिटीज को। और अगर हो सके तो दूसरे प्रकार के जो व्यायाम है, जैसे कि वेट ट्रेनिंग, वजन उठाना, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और कुछ योगा एक्सरसाइजेस, ये सब इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ पेशेंट को। तीसरा चीज़ है दवाइयाँ। ये आपका डॉक्टर तय करेगा कि आपको दवाई की ज़रूरत है, और है तो किस तरह के दवाई की ज़रूरत है। 2 तरह के दवाइयाँ होते हैं। एक है जो गोलियां हैं जो खाना होता है, और दूसरा इंसुलिन की इंजेक्शंस होती हैं। तो आपको अब तक ये जानकारी मिल गई होगी कि जो 3 चीज़ें हैं डायबिटीज़ के उपचार में, इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ पेशेंट को खुद करना पड़ता है। वो है परहेजी और व्यायाम। और सिर्फ एक ही चीज़ डॉक्टर को करना पड़ता है, वो है आपको गाइड करना, आपको सलाह देना डायबिटीज़ के बारे में, और आपके जो दवाइयाँ हैं उसको एडजस्ट करना। इतना तो क्लियर है कि अगर आपने आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रखा, जिसका मतलब है कि अगर खाली पेट तपास करें या खाने के बाद या दिन में कोई भी टाइम पे तपास करें, तो आपका खून का शक्कर का प्रमाण 150 से कम होना चाहिए। इस तरह आपने देखा कि डायबिटीज़ में 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो है परहेजी, व्यायाम और दवाइयाँ। अगर हम तीनों को 30-30% का इम्पोर्टेंस दें, तो आपको पता चलेगा कि 60% काम डायबिटीज़ के उपचार में वो पेशेंट का है, यानी कि परहेजी और व्यायाम। और सिर्फ 30%, 30% जो काम है वो डॉक्टर का है, वो है आपको सलाह देना और आपकी दवाइयाँ का डोजेस एडजस्ट करना। इसीलिए पेशेंट और डॉक्टर मिलकर डायबिटीज़ को काबू में ला सकते हैं और ब्लड शुगर को, खून में शक्कर का प्रमाण को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का अर्थ होता है कि अगर आप खाली पेट तपास करें या खाने के बाद शक्कर तपास करें या दिन में कोई भी टाइम तपास करें, तो ब्लड शुगर 150 के नीचे होना चाहिए, 150 के नीचे होना चाहिए। और अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल में रखा तो लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। मधुमेह में खाना लो कैलोरी, लो फैट यानी कि चर्बी का प्रमाण कम होना चाहिए, शक्कर का प्रमाण कम होना चाहिए, बट वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें हर तरह की चीज़ होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स का प्रमाण भी सही होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में सारे जो हरी पत्ती जैसी सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि करेला, मेथी, पालक, तेंदली और बाकी जो भी हरी सब्जियां हैं वो सब ले सकते हैं। सलाड्स में काकड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, ब्रोकोली, गोभी, ये सब ले सकते हैं। सलाड्स में शक्कर का प्रमाण बहुत कम होता है, और अगर पेशेंट को भूख लगे तो सलाड्स एक्स्ट्रा भी ले सकता है। और मधुमेह पेशेंट को अगर बीच में भूख लगे और कुछ खाने का दिल करे, तो ऐसा रिकमेंडेशन है कि वो सलाड्स खाए और बिस्किट्स वगैरह या फ्राइड आइटम से, तला हुआ चीज़ों से दूर रहे। फल में डायबिटीज़ के पेशेंट को दिन में
100 से 150 ग्राम से ज़्यादा फल नहीं खाना चाहिए। और इसमें जामुन और अन्य तरह के जो बेरीज़ हैं, बोर जो मिलते हैं, वो अच्छा होता है, जिसमें शक्कर का प्रमाण कम हो सकती है। दूसरा लिस्ट में एप्पल, पेरू, इस तरह के फल होते हैं। फिर पपैया और वाटरमेलन ये भी आप ले सकते हैं। और मैंगोज़ और ग्रेप्स ये कम प्रमाण में लेना चाहिए। डायबिटीज़ में जो तला हुआ चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम्स है, वो कम लेना चाहिए। दही ले सकते हैं अगर वो स्लिम मिल्क से, यानी कि जो दूध से जो चर्बी निकाला गया, मलाई निकाला गया हुआ दूध है, उससे बनाया हुआ दही वो लेना चाहिए। चाय और कॉफ़ी ले सकता है, पर उसमें मलाई कम वाली दूध यूज़ करना चाहिए और शक्कर नहीं डालना चाहिए। अगर चाहिए तो जो शुगर फ्री है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिसको कहते हैं, वो 1 या 2 दिन में यूज़ कर सकते हैं। वाइट ब्रेड, सफ़ेद ब्रेड और ब्राउन ब्रेड ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वाइट ब्रेड मैदा से बनाया जाता है। वाइट ब्रेड में सिर्फ कैरेमल डाली जाती है, जिससे शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है और ये खाने से खून का शक्कर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। नॉनवेज आइटम्स में आप बगैर हड्डी का चिकन, अंडा का सफ़ेद और उबाला हुआ मच्छी खा सकते हैं। अन्य जो सी फूड है, यानी कि क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। और जो रेड मीट है, मटन, ये नहीं खाना चाहिए, या जितना कम आप खा सकते हो वो कम ही खाना चाहिए। 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है डायबिटीज़ के डाइट में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है। पहला, डायबिटीज़ का खाना शक्कर का प्रमाण कम होना चाहिए, चर्बी का प्रमाण कम होना चाहिए, लो कैलोरी होना चाहिए, पर वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। एक टाइम पे कम खाना खाना चाहिए और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, जैसे कि वीट के सब्जी, वीट और सलाड्स जो है वो हाई फाइबर होती है, तो इस तरह का खाना खाना चाहिए। डिनर आपका, रात का खाना जल्दी खाना चाहिए और लाइट होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि रात का शक्कर का प्रमाण बढ़े नहीं। चौथा, सारे हरी सब्जियां जो है बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें करेला जैसे सब्जियां हैं वो एक्चुअली शुगर को कम करते हैं। फिफ्थ, फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कैलोरी उनका बहुत ज़्यादा होता है और उससे मोटापा हो सकती है। सिक्स्थ, बिस्किट्स, फरसान, केक्स, आइसक्रीम्स और स्वीट्स ये नहीं खाना चाहिए। सातवां, नॉनवेज में बगैर हड्डी का चिकन, अंडे का सफ़ेद या उबाला हुआ फ़िश, मच्छी ये ले सकता है। आठवां, थोड़ी सी प्रमाण में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे शुगर फ्री वो यूज़ कर सकता है 2 या 3 दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। 9वां पॉइंट ये है कि फल का रस जो है, फ्रूट जूसेस, ये अवॉइड करना चाहिए, पर आपको चाहिए तो आप नमक वाला नींबू पानी, पतला छाछ और सूप्स, वेजिटेबल सूप या क्लियर चिकन सूप जो होता है वो ले सकते हैं, और कभी कभी नारियल का पानी भी ले सकता है। 10वां पॉइंट ये है कि रोटी, गेहूं का बनाया हुआ रोटी, बाजरा रोटी, जवार रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड ये ले सकता है। मैदा का बनाया हुआ जो रोटी है, जैसे कि रुमाली रोटी या नान, ये अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और सफ़ेद ब्रेड और ब्राउन ब्रेड भी अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद।